चलो सपोज मान लो देर इज ए रॉड of uniformly distributed rod is there, charge is uniformly distributed. Okay, इधर से a distance दूर में I want to find electric field at this point P. मान लो total charge is Q. So what is the formula we can use? KQ by R square. We can use that one? No, we can't use that one. Why? Because it is a distributed charge. Only for point charge only KQ by R square. Continuous mass distribution go, we cannot use the KQ by R square. So uske liye, how to tackle that problems we will see. So electric field due to continuous charge distribution. इसके बाद if you see the 23 years का which is there in website में, if you see all questions you can answer, every question you can answer. Okay, so concentrate करो. Electric field due to continuous charge distribution. So how to tackle this one we'll see. How to find field due to continuous charge distribution. Okay, suppose मान लो you have a rigid body. It can be rod, it can be sphere, it can be anything of uniformly distributed charge completely. इस चार्ज की वजह से इधर इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच? मान लो टोटल चार्ज इज Q. So it is KQ by R square. Because of this total mass की वजह से इस पॉइंट में KQ by R square means no, right? We can't use that formula. For point charge only we can use. So then what we have to do? Then what we have to do is, instead of complete charge, we will take small dq charge. Okay, मान लो it is at R1 distance and dq is always positive charge. dq की वजह से electric field is away dE1. Small electric field we want to find. Okay, similarly I'll take dq. I'll take dq. Okay, इसके वजह से मान लो R2 distance दूर में इस पॉइंट, सॉरी, so it is a continuous participant body. Okay, now this dq की वजह से R2 distance दूर में इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इज dE2 एंड इस dq की वजह से मान लो R3 डिस्टेंस दैट इज dE3. सो ऐसा dq 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 तोड़ के उस स्मॉल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर ट्राइंग टू फाइंड इंडिविजुअली. दैट मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is nothing but dE1 vector plus dE2 vector plus dE3 vector so on to infinity. Okay, addition of all electric field को क्या बोलते हैं? Instead of doing each and every addition को which variable we have to take? Addition of all electric field को which variable? Differentiation or integration? Which one? Addition of all variables को integration. Okay, integral dE. So this operation, the integration will take care of addition of all the electric field. And dE ka formula, you know, dE formula will be small electric field because of this small charge will be K dq, because of small dq, right, by R square. It can R1, R2, R3, anything. This is the formula we use. Okay, so continuous mass distribution diya to what we have to do? First, we have to cut a small dq charge, and dq charge की वजह से small electric field find करो, then integrate, we'll get the total electric field at that point. Okay, okay, so और भी ठीक है, understood का बेटा? Now हम लोग क्या करेंगे? To understand all derivations करने से पहले we have to know some terminologies, we have to know, that we will see. Types of charge distribution. Okay, first one is linear charge distribution. ये आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं. वी आर यूज फॉर वन डायमेंशन बॉडी को वी आर यूज दिस लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करने वाला हूं. लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं. ओके, सपोज मान लो दिस अ रॉड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड,
Okay, and total charge is q, and उसका length is l, right? Then lambda is called linear charge density. Definition क्या है? Charge per unit length is called linear charge density. Charge per unit length, एक unit length में कितना charge है, that is called lambda, charge per unit length. Okay, now what we will do, we will take a small elemental. Suppose I want to take a small charge, I'll cut a small element, उसका charge is dq, and मान लो उसका length is dx. देन इसका लैम्डा कैसे आएगा? टेल में, लैम्डा इज, उस एलिमेंटल चार्ज का लैम्डा इज डी क्यू बाई चार्ज पर यूनिट लेंथ dx. So therefore dq is equal to lambda dx. So lambda के बारे में लर्न करो, न्यूमेरिकल्स करने समय समझ में आएगा आपको क्यों क्या यूजफुल. Okay, charge per unit length को we call as lambda, and here total charge per unit length and this total elemental charge per unit length, both are lambda is same. Okay, from this dq, wherever dq is there, you can substitute lambda dx in one dimension body. One dimension body में wherever dq is there, lambda dx आएगा. Now we'll go for a two dimension body का. So linear charge density or linear charge distribution we can call. Okay, now second one. Second one क्या है? Surface charge distribution or surface charge density. We represent as sigma. And उसका this is useful for two dimension body. Two dimension body में we'll use sigma. Okay. Suppose मान लो there is a square plate is there. Uniformly distributed square plate is there. इसका total charge is Q and इसका total area is A. So इसका sigma कितना होगा? Charge per unit area is called surface charge density. Okay, charge per unit area. Now if I want to cut the elemental charge, आपको पेरेंट वाला कौन सा शेप रहेगा? एलिमेंटल आल्सो विल कट द सेम थिंग. ओके, सो विल कट ए स्मॉल स्क्वायर, इसका dq है and इसका एरिया इज dA. देन टेल मी व्हाट इज सिग्मा विल बी? चार्ज पर यूनिट एरिया. So dq है, therefore wherever dq is there in two dimensional body में we do sigma dA in terms of surface charge density. नो थर्ड डायमेंशन को क्या बोलते हैं? थ्री डायमेंशन को सरफेस हो गया. देन वी कैन कॉल एस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. उसको रो से रिप्रेजेंट करेगा. ओके, सो ले लो, हो गया ना? चलो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. So we are taking a sphere of uniform distributed sphere. Okay, total charge is Q and total volume is V. Now iska we represent as, this is for three dimension body and we represent as rho. So rho is charge per unit volume. Charge per unit volume is called as volume charge density. Okay, now same elemental charge should be taken as the like parent element ka. So volume I'm taking small volume dV and small charge is dq. So therefore rho can be for the elemental charge ka dq by dv and dq is equal to rho dv. Okay, so these are the three things you have to know. Now एक एक का we will derive, एक कैसा यूज करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, we will see. So you understanding that? Yes. Notes neatly लिखो, बहुत हेल्पफुल होगा. सी लास्ट डे बिफोर यस्टरडे one girl wrote, maybe she she's expecting maybe 100 percentile this time JEE mains में. So we will see because अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा. Last time she got 98.9. This time so she cried also, sorry I got less marks बोल के. This time she is happy. Maybe she'll get पता नहीं 99 based on the other persons लिख रहे हैं.
देखेंगे. ओके, चलो. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर axial point. He is also studying from ninth in my permutation. Okay. Okay. Electric field due to uniformly charged wire along the axial point. Okay. चलो. We'll derive एक एक का. Derivation is important. Then on formula बैठ करने से कुछ नहीं होगा अभी. Okay. चलो. Uniformly charged distributed is there. Okay. इस रॉड को मुझे a डिस्टेंस दूर में I want to find electric field at this point P. Okay. इसका total charge is Q and इसका length is L. I want to find electric field at this point. Okay. Since we can't use, only we can use the formula only for point charge only. That's why आपको क्या करने का first step आपको तोड़ना पड़ेगा small elemental charge. Small elemental charge तोड़ना पड़ेगा. So मैं क्या करूंगा? I will cut a small elemental charge. Cut a small elemental charge. उसका charge is dq. उसका length is dx. Small elemental length. इधर से कितना दूर है? वो dq element is x. Always we will take the third variable. Always we will take a third variable so that we can integrate from initial point to final point. Pura. Okay. May small elemental, which is like same as that of parent element on I took, dq, dx, and x distance दूर में the dq element is there. Okay. Now tell me, what is the electric field because of this small dq charge? What is the electric field at this point? Electric field because of point charge का formula मालूम है ना? Point charge का formula, what is the formula? K dq by dx. dq by कितना distance है? Electric field x distance है. So x square. This is because of small charge के वजह से small electric field. And electric field इधर से इसके वजह से electric field is away, right? dE. And if I cut a same dq element, again electric field is away only. All are away only. That means we are doing simply addition, right? Integration किया तो हो जाएगा, right? So we will integrate now. So net electric field will be, E net will be, net electric field at this point P is, आपको क्या करने का? Integral D करने का. Okay, I'm integrating both sides. K dq by x square. And this integral D is nothing but E only, net electric field. Along the axial point I'm calling. Along the axial point. Okay. Now इसमें से can limits from where to where you will put, tell me? If the dq element is starting point, कितना distance है from point P से कितना distance है? The dq element. If dq element is the starting point, how much distance from here to here? How much distance? A, right? Now if the dq element is ending, so how much distance from here to here? A plus L. So that means I will integrate from A to A plus L K dq by x square. Because the integration will take care of completely all dq charges electric field when we integrate. Okay. Now can we integrate directly here? X is there, dq is there. We cannot integrate. We want to bring in terms of dx terms में लेके आए तो then only, see normally क्या integration कैसे रहेगा? X power n dx. Then only we can integrate. Okay. Now this is a one dimension body. dq को I can attach, tell me. One dimension body in terms of lambda. Lambda dx. Right? ले लो. So electric field along the axis is equal to integral A to A plus L K lambda dx by x square. Okay. So इसमें से कौन सा constant है? K lambda आ जाएगा. And integration of x power minus 2 will be x power minus 1 by minus 1, right? Nothing but minus 1 by x. Yeah, integration याद है? Integration of x power minus 2 is minus 1 by x. From limits from A to A plus L. Okay, minus will be coming outside. K lambda. Okay, upper limit minus lower limit. 1 by A plus L minus 1 by A. So क्या आएगा? E is equal to K lambda into A minus A minus L, right? A minus L. So minus L
बाई ए इंटू ए प्लस एल. ओके, सो मैं क्या करूंगा, माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा. सो ई इज इक्वल टू के लैम्डा एल बाई ए इंटू ए प्लस एल. एंड व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा फॉर बिगर रॉड, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्यू बाई एल, राइट. सब्स्टिट्यूट करो, के एल बाई ए इंटू ए प्लस एल इंटू क्यू बाई एल. सो एल एल कैंसिल. सो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस कितना होगा, के क्यू बाई ए इंटू ए प्लस एल. दिस इज द रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ एक्सिस में. ये थोड़ा फॉर्मूला भी लर्न करे तो अच्छा. ओनली ये रॉड अलोंग द एक्सिस वाला इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. एंड से ए डिस्टेंस दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बोले तो रॉड के वजह से मींस के क्यू बाई, देखो ए छोटा डिस्टेंस इज हाउ मच ए एंड बड़ा डिस्टेंस इज ए प्लस एल. डायरेक्टली यू कैन बाय के क्यू बाई छोटा डिस्टेंस इनटू बड़ा डिस्टेंस. दिस वन लर्न करो, फॉर्मूला सेट में दिया है, इट विल बी कमिंग. ओके, के क्यू बाई ए इंटू ए प्लस एल. So point charge के लिए only we can apply the formula. That's why only I cut a small point charge and took a third variable and I found, I integrate, will get the total charge. Total electric field will get. Okay, now next one. एक एक का देखने वाला है, we'll see. हो गया? Done ना? हाँ. चलो. Now we'll go for the electric field due to uniformly charged semicircular ring. Semicircular ring के वजह से we are trying to find the electric field. This is a semicircular ring. Okay, center वो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सेमीसर्कल. ये भी वन डायमेंशन ओनली. लाइक स्ट्रेट वायर को आई विल बेंडेड लाइक दिस, दैट्स इट. इसका रेडियस इज कैपलर. कैपलर. आई वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज हाउ मच. ओके, इसका रेडियस इज आर. सो रेडियस को इधर रखेंगे, सो इजी हो जाएगा. The total charge is Q and radius is R. I want to find electric field at the center O. So मैं क्या करूंगा, directly we cannot say K cube by R, right, capital R square, because it is a continuously charge distributed. Okay, मैं क्या करूंगा, elemental charge कट करना पड़ेगा. Okay, मैं क्या करूंगा, इधर से थीटा एंगल में जाके, ये पेरेंट वाला अगर आर्क है ना, so I'll cut one small arc, small elemental arc. ये elemental arc है, उसका एंगल इज डी थीटा. ओके, एक स्मॉल एलिमेंटल आर कट करूंगा बिकॉज पेरेंट कैसा है उसी शेप में एलिमेंटल आर कट करना पड़ेगा. ओके, इसका रेडियस इज आर, राइट, जस्ट दैट. ओके, एंड इसका चार्ज इज डी क्यू, स्मॉल डी क्यू, एंड उसका लेंथ इज डीएल. डीएल इज अ स्मॉल लेंथ. ओके, आर्क लेंथ आई एम टेकिंग. ओके, सो टी टैंगल थर्ड वेरिएबल लिया भाई. बाद में क्या करूंगा, इंटीग्रेशन इधर when the initial point is here means 0 and when the final point is ऐसा है तो क्या होगा, 180 रहेगा. so 0 to pi by pi we can integrate. okay, theta ले रहा हूँ. okay, understood? okay, now tell me, because of this charge electric field, small electric field is away ना towards इसके वजह से away, right. I call it as DE, right. Now tell me, straight line horizontal and this line is theta, and horizontal and this line is theta. This is also theta. Now tell me what is the component. D का इस तरफ component will be, उस तरफ component क्या होगा, D cos theta, and इस bottom component is D sin theta. मतलब आपको इंटीग्रेशन करने समय you have to check any component is getting cancelled or not.
Directly, if you integrate DE, maybe if any component is getting cancelled, final answer will be wrong. That's why check करना पड़ेगा उसके वजह से कुछ component cancel हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Okay. Now इसका same symmetrical element ले लेंगे. Symmetrical element means exactly इधर ले लेंगे. मतलब इधर से theta angle जाके I'll cut a small arc and इसका DQ charge है, इसका length is DL and AR है. इसके वजह से DE will be like this. And the horizontal line this one is theta. So इस तरफ कंपाउंड क्या होगा? DE cos theta and bottom component is DE sin theta. Now tell me which component is getting cancelled? DE cos theta is getting cancelled. मतलब अगर इधर DQ एलिमेंट है तो उसका करस्पॉन्डिंग का DQ एलिमेंट का DE cos theta is getting cancelled. Okay, that's why when you're doing integration, मतलब x component is getting cancelled, right? आपको that means EX is 0, EY is क्या होगा? Simply integrate DE sin theta to get the total net electric field. If you integrate this one, you will get. Okay, and DE formula will be DE is how much? K DQ by R square. Okay, again problem क्या है? DQ and we cannot integrate, right? R square वगैरह is there. So क्या करेंगे? DQ in terms of इधर सर्च करो, ठीक है, K DQ by R square into sin theta. Okay, देखेंगे. Okay, what is DQ in terms of lambda में? Lambda into DL here. DX के जगह DL है ना, lambda ये याद है ना? Lambda is equal to DQ by DX means DL. So DQ is equal to lambda times of DL, right? आनो करो इसमें integral K lambda DL by R square sin theta. And limits from where to where you have to put theta में? When the DQ element is here, theta is 0. When the DQ element last में pi, so 0 to 180 degrees. ठीक है. But can we integrate now? We cannot integrate because theta is there. Because R is constant, बाहर आ जाएगा. देखो, K lambda and R square. Radius is constant, right? So it will be only sin theta DL रहेगा. We cannot integrate. आपको theta d theta रहने का. Then only we can integrate. Now क्या करोगे बोलो? I want DL in terms of d theta. DL in terms of d theta. D theta into R. So a arc length I'm taking outside. Arc length I'm taking outside. This is d theta. This is R. This is DL. याद है ये फर्स्ट ईयर में DL is equal to R d theta. याद है ना? And you know this d theta should be in radians. Radians. Then only this formula gets valid. Okay, now substitute. K lambda by R square. Sin theta का integration is minus cos theta from, ठीक है, इस DL के जगह में सब्स्टिट्यूट करो. K lambda by R square integral sin theta into R d theta 0 to 180. So एक R cancel. So it will be K lambda by R sin theta का integration is Say plus cos theta plus cos theta. integration of sin is minus. Differentiation of sin is cos, right? Integration is minus. Right. So 0 to 180 degrees. Okay. So E by this y direction में है sir. So क्या solve करो कितना आएगा? EY is equal to upper limit minus lower limit करके solve करो. Minus K lambda by R. Cos 180 is minus 1. Minus cos 0 is 1. So it is By R. 2K lambda by R. And what is lambda? Again, write in terms of charge में. Charge per unit length, right? कितना होगा? Tell me. EY is equal to 2K by R. Lambda is charge per unit length. Length कितना होगा?
लेंथ आई वांट, इसका लेंथ कितना होगा टोटल लेंथ? देखो इसका Pi r. पाई आर, राइट? हाँ, सो पाई आर, समझ में आया? बिकॉज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज टोटल चार्ज इज क्यू पर यूनिट लेंथ, इसका लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर बाई 2, राइट? पाई आर, ओके, कितना होगा फाइनली? 2q by pi r square. 2 q by pi r square. And y direction में in suppose JEE mains में sometimes direction also they are asking, sometimes downwards and net electric field downwards, so minus j cap. सो आपको ये डरने का नहीं है, अभी पूरा एलिमेंटल पेरेंट का कौन सा शेप है वही शेप में लेके इलेक्ट्रिक फील्ड, बट करने समय चेक करो एलिमेंटल सिमेट्रिकल एलिमेंट इज देयर और नॉट, कैंसिल। अगर सिमेट्रिकल एलिमेंट नहीं है तो यू हैव टू इंटीग्रेट एक्स आल्सो सेपरेटली, वाई आल्सो सेपरेटली, देन नेट वी हैव टू फाइंड। फिर हम बहुत साइलेंट है, क्या है, समथिंग समवेयर चला गया ना, राइट? ओके, चलो। बिकॉज इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना अच्छा है मैग्नेटिक फील्ड में, सेम वे वी आर टेकिंग द करंट कैरिंग वायर के वजह से आर डिस्टेंस दूर में, आई वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, दैट टाइम अगेन विल कट ए स्मॉल एलिमेंट, करंट एलिमेंट लेके सॉल्व करने वाला है। दैट्स वे आपको इधर इधर मिस हो गया तो उधर फंस जाएगा, इसलिए लर्न करो। चलो हो गया, नेक्स्ट। हाँ, now tell me, suppose there is a ring, uniformly charged distributed ring है। now center में I want to find the net electric field, how much center में net electric field find करेंगे? 0. हाँ, 0 रहेगा। ओके, भाई इफ यू कट ए स्मॉल डी क्यू एलिमेंट, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, हियर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे, एंड इसका वजह से इधर एलिमेंट कहता है सिमेट्रिकल एलिमेंट लगाता है, इसका अवे एंड वाला, सो पूरा कैंसिल हो जाएगा, एनी वे लगाओ पूरा कैंसिल हो जाएगा सिमेट्रिकल एलिमेंट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए यूनिफॉर्मली, नॉट ओनली दिस वन, कोई भी शेप रेक्टेंगल होने दो, स्क्वायर होने दो, कंप्लीटली सेंटर में ऑलवेज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ओके, ये प्रॉपर्टीज नहीं किया ना, शील्डिंग बोल के आएगा, दैट टाइम कोई भी अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। फैराडेज केज बोलते हैं उसको जनरली, फैराडेज सुना होगा ना, किधर सुना फैराडेज केज बोल के? ओके, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ओके, उसके साथ बचने का व्हाट यू विल डू, मतलब दैट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड नॉट टच यू, व्हाट यू विल डू? electric field is like coming to some charges there, electric field lines are coming, that should not come to you, आप क्या करेगा? तो बोलो, Get a charge of the same sign and then it'll probably प्रैक्टिकली repel. बोलो, समथिंग चार्ज किधर से लेके आएगा, शॉप में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग बोल के बोलेगा। हाँ, प्रैक्टिकली विच इज पॉसिबल वाला बोलो। so generally you will sit in a one conductor, कोई भी कंडक्टर के अंदर if you sit inside electric field 0, मतलब आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैनॉट पास, बिकॉज एक कंडक्टर के वजह से दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, सपोज पॉजिटिव चार्जेस आर कमिंग, ये नेगेटिव हो जाएगा, इट विल टर्मिनेट एट दैट पॉइंट ओनली, इट विल नॉट कम इनटू साइड इनसाइड। इनसाइड में ऑलवेज इट इज लाइक केज जैसा, इफ यू सिट इनसाइड द वन कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैनॉट कम टू यू। ओके, फैराडेज केज बोलते हैं एक्चुअली। चलो अंडरस्टूड वाला, नो नो ट्राई करो। फॉर ए क्वाड्रेंट आई वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम मेथड में करो, दैट मींस this is a uniformly distributed quadrant. Quadrant means you're right, 1/4 of the circle, right? 90 degrees. And total charge is q, this is one dimension body lambda, इसका radius is r, इसके वजह से I want to find electric field at O is how much? Quadrant.
व्हाट इज फर्स्ट स्टेप अगेन? इट इज नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर, आपको कंपल्सरी तोड़ना पड़ेगा स्मॉल पॉइंट चार्ज की वजह से. सो कैसे तोड़ेंगे? इधर से थीटा एंगल जाके यू विल कट ए स्मॉल आर्क. ओके, एक स्मॉल आर्क. इसका चार्ज इज डी क्यू एंड इसका स्मॉल एंगल इज डी थीटा एंड इसका रेडियस इज आर. ओके, एंड दिस डी क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे डी. ओके, बिफोर इंटीग्रेटिंग चेक करने का कुछ एलिमेंट कुछ है क्या? नाउ दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज थीटा, हॉरिजॉन्टल दिस इज थीटा. नाउ कंपोनेंट क्या होगा? डी cos theta and down component is de sin theta. Now tell me, any symmetrical element is there to cancel? No. That means you have to integrate separately. Ex is कितना? Integral de cos theta करना पड़ेगा and ey is integral de sin theta करना है. And limits काउंट कितना रखेगा जब में? Here to here 0 to 90. 0 to 90 degrees लगा के सॉल्व करो. This is also one dimension body. So D already you know, D is K dq by capital R square. But in terms of lambda में K lambda, since I took DL right, DL का ले लो, आपको कितना होगा? D so lambda DL right by R square. Now it's substitute and tell. अगेन थीटा भी है ना, अगेन यू कैनॉट इंटीग्रेट राइट. सो डीएल के जगह में उधर ही ले लो, हो जाएगा के लैम्डा डीएल. आर्क लेंथ इज नथिंग बट आर इंटू डी थीटा, आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर. सो एक आर कैंसिल करो. नाउ सब्स्टिट्यूट हियर, आराम से हो जाएगा. के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा डी थीटा. नाउ इंटीग्रेट. ये बाहर आ जाएगा. के लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ cos theta is sin theta from 0 to 90. So 2k by pi r square. For ex. Ex is how much got? 2k by pi r square. Okay, in terms of lambda बोलो, लास्ट में करेंगे. Lambda terms में In lambda by r. k lambda by r you got ex. Similarly ey Also k lambda by r. k lambda by r आएगा. Okay, now if I draw the diagram for this one, ex ey ना, so इधर and इधर दोनों I can call e and e, both are same right. So this is e, this is e. Then what will be the resultant will be e root 2. Oh, Net electric field is e root 2. So substitute करो. So therefore net electric field is k lambda by r into root 2. Okay. समझ आया? Understood? Now quadrant, circle ऐसा में आपको जनरल फार्मूला आएगा. एक जनरल फार्मूला आएगा. जनरल फार्मूला से you can get the directly quadrant, semicircle, any angle you can find.
दैट फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर. एक फॉर्मूला रिमेंबर किया तो ऑल सब कुछ आ जाएगा. ओके, तो वो फॉर्मूला देखेंगे जनरल आर्क के वजह से. जनरल आर्क, सो डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे डेरिवेशन से पहले. तो पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज नॉट ए सेमी सर्किल, नॉट ए क्वाड्रेंट, ए जनरल आर्क है एंड रेडियस है आर. उसका अल्फा इज द एंगल बिटवीन देम. ओके, अल्फा इज रेडियंस. ओके, एट दैट टाइम इसका चार्ज है क्यू, इसका लैम्डा एंड रेडियस इज आर. आई वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट वो. सो सेम मेथड में अगर करके सॉल्व करके आफ्टर दैट विल गेट द आंसर. दैट आंसर वी आर राइटिंग. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का करो. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखने के तो 2k lambda by r into sin alpha by 2. This is the formula you have to learn. 2k lambda by r into sin alpha by 2 is the general arc के वजह से at the point वो में electric field we are trying to find. This is the thing. That formula फिर से डिराइव करने के लिए सेम मेथड. आपको इधर से कैसे लेने का मालूम है? सेंट्रल से थीटा एंगल जाके इधर से एक आर कट करने का. ऐसे सेम मेथड करके सॉल्व किया तो you'll get the answer. Okay, and integration is from minus alpha by 2 because आधा है तो alpha by 2 right. Minus alpha by 2 to alpha by 2 integration किया तो we'll get the answer 2k lambda by r sin alpha by 2. Now tell me, for quadrant what will be the alpha value for quadrant? Alpha is how much? 90. 90 by 2 is 45. sin 45, 1 by root 2, and root 2 into root 2, एक root 2 cancel, root 2 k lambda by r, which we got in quadrant. Okay, and if it is a semicircle, alpha is 180. 180. 180 by 2 is 90, sin 90 is 1, 2 k lambda by r. So any angle you can derive from this. Okay, so 2 k lambda by r into sin alpha by 2 is the answer. It is also symmetrical element के वजह से ex will be cancelled, ey एक ही आएगा. ये फॉर्मूला आपको बैठ करना पड़ेगा. ओके ना, वही क्वेश्चन दूंगा, करो कॉपी डेट. हु विल चेक करेंगे. सो this angle like given as 60 degrees and O. इसका radius is R. Total charge is Q. Okay. Now he is asking what is the net electric field at this O. Net electric field at O. Thank you so much. K lambda by 2r. तो मैं ऑप्शन से लियो. टेंशन क्यों ले रहा है? Okay. I'll give options. You tell me which option is there. K Q by pi r square. 2k Q by pi r square. 3k Q by pi r square. 4k Q by pi r square. ऑप्शन 3 सी. देखिए इसका क्या है, कितना है. कितना बोला शिवांगी बिफोर समथिंग टेलिंग. ओके करो. First one. ओके देखेंगे आपको कितना सात्विक. ऑप्शन सी. ओके So C. आपका. C. ओके 2k by pi r square. ओके आंसर इज सी. आंसर इज सी. Okay, what is the formula we used Shivangi before? Tell me. Net electric field at war. 2k lambda by r sin alpha. 2k lambda by r into sin alpha by 2. Alpha by 2 is sin 30, right? 1 by 2, 2 to cancel, k lambda by r. But options लो देने से charge में है. Okay, lambda you know, charge per unit length. Okay,
आर चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट? हाँ, ए लेंथ कितना है? लेंथ इज, बोलो, आर्क लेंथ, रेडियस एंड थीटा, व्हाट इज द रिलेशनशिप? हाँ बोलो, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, राइट? हाँ, आप क्या करेंगे इधर? सो के क्यूब बाई आर, हाँ, सो आर्क लेंथ इज नथिंग बट आर इंटू थीटा, बट थीटा इधर क्या, ऑलवेज यू टेक रेडियंस, थीटा इज रेडियंस, डिग्रीज नहीं लेने का. सो 60 इज 5/3, राइट? 5/3. नो, क्या होगा? 3 विल बी कमिंग आउटसाइड, 3k³ by pi r². सो थोड़ा वो लोग ऑप्शंस में वांटेडली दे गिव लाइक दिस, सो दैट इट विल बी, नो उधर तक आएगा, अरे आंसर नहीं मिल रहा है, क्या 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 करने का, वही रहेगा. ओके, चलो नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन. कॉपी डेट, हाँ ना करो. Semicircle is given to you. Oh, so here it is a positive charge and here it is a negative charge. इसका lambda है and radius is r. I want to find electric field at O. So half of it is positive and half of it is negative. हाँ, half पे positive, half पे negative. Electric field at O. Is it 2k lambda by r? 2k lambda by r, right? Ah, yes, correct. 2k lambda by r is answer. देखो, this is a quadrant, right? Quadrant का already you know, इसका net electric field कितना है quadrant का? √2k lambda by r. पॉजिटिव चार्ज का वे एंड नेगेटिव चार्ज का क्वाड्रेंट का सेंटर में एग्जैक्ट में, सो सेम राइट, अगेन √2k lambda by r, राइट? क्वाड्रेंट का वी डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मूला, राइट? ओके, एंगल बिटवीन देम इज 90 बिकॉज 45 45 45 45 45, सो 90 है. ओके, नाउ इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी ऐसा रहेगा. सो ई एंड ई बोले तो e√2, so E is √2k lambda by r into √2. So therefore, 2k lambda by r I cap. The given will be options for I cap. The direction also important. Okay.
सो सेमी सर्किल का सर्किल का जनरल आर्क का विडन, रॉड का एक्सिस में भी ऑल्सो विडन. ओके, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सम मोर आर देयर, विल सी. चलो, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लीनियर चार्ज वायर इक्वेटर में, मतलब परपेंडिकुलर में वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अंडरस्टैंड करो एंड सॉल्व करो. दिस फाइनाइट रॉड इज देयर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड इज देयर. मुझे एक्सिस में नहीं चाहिए अभी, बिफोर एक्सिस में राइट, अलोंग द एक्सिस में विडन. बट नाउ इक्वेटर मींस नथिंग बट d डिस्टेंस दूर में आई वांट टू फाइंड electric field at this point P. And you have to understand one thing, that it is, we are not taking exact center. Okay, it can be down also, it can be here also, it can be here. The symmetry nahi hai hoga. Okay, now I want to find electric field for this one. Now kya karega? How to find electric field at this point? Is not kq by r square. Iska total charge is q and lambda is a linear charge density. What to do? Can we try? हाँ, Can we try like? हाँ ट्राई करो, देखते हैं. बिकॉज ये आ जाएगा ना, इन्हीं क्वेश्चन यू कैन सॉल्व. नहीं तो नॉर्मली 85-90% तो ओके, नॉर्मल फॉर्मूला से नॉर्मल छोटे छोटे कर सकते, ऑल पीपल विल डू. ये वाला ओनली एक्सटेंड आगे कर लेके जा सकेगा. आर्क में दूंगा, मतलब एलिमेंटल चार्ज दूं, अब भी करेगा, कट करेगा. इसका इनिशियल ले लो, थोड़ा समझ में आएगा. देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट को वी कॉल्ड एज θ1, ये वाला θ1 एंड ये वाला θ2. Okay, because we have to vary from downwards is minus θ1 to θ2. Will finally integrate करने समय minus θ1 to plus θ2 तक we are integrating finally. Okay, we'll take a small elemental charge dq. किधर से? सेंटर से y डिस्टेंस दूर जाके we will take a small elemental, that is dq, and उसका length is dy, small dy. ओके, नाउ इधर से कितना एंगल ने, देखो इधर लीनियर भी होगा, एंगुलर भी हो रहा है. देखो, ओके, इधर से 5 एंगल जाके आई एम कटिंग दिस वन, मतलब लीनियर वाइज में, एंगुलर वाइज आल्सो इज हैपनिंग. एंड इसका एंगल इज d5. ऐसे लेना, परपेंडिकुलर में आगे भी जा रहा है, ये एंगल भी जा रहा है ना. नाउ इस एलिमेंटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे डी. ओके, नाउ इसका कंपोनेंट्स इफ आई टेक, दिस इज 5 राइट, दिस आल्सो 5, तो क्या होगा? डी cos 5 and downwards is d sin 5. Any component is getting cancelled? A vertical component will get cancelled. ऐसा लगेगा वर्टिकल कंपोनेंट इज गेटिंग, बिकॉज ये वाला डी कॉस पे डी साइन 5 वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होगा बोल के लगेगा. बट यू अंडरस्टैंड, वी आर नॉट टेकिंग एग्जैक्टली सेंटर में नहीं ले रहे. ओके, मतलब इसका सपोज ऊपर लिया, इसका कंपोनेंट इज नॉट एबल टू कैंसिल दिस कंपोनेंट, सो दैट्स व्हाई आपको दोनों इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, सेंटर में रहते स्पेशल केस है उसमें. सो नाउ आपको EX भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा.
integral d cos phi, and Ey also we have to find integral d sin phi. Now try. फर्स्ट x का करो पूरा नीटली. DE कितना होगा? इंटीग्रल k dq बाई, मान लो स्मॉलर डिस्टेंस, इधर से डिस्टेंस स्मॉलर, सो स्मॉलर स्क्वायर cos phi. ओके, नाउ dq के लिए we want in terms of lambda, right? k lambda, इसका थिकनेस कितना है? dy, राइट? चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट? dy, लैम्डा dy बाय r स्क्वायर cos phi. But we cannot integrate still. We want in terms of phi. Then क्या करेगा? phi टर्म्स में कैसे लेके आएगा? चल में dy in terms of phi. ओके, देखो ये छोटा ट्राइंगल, देखो ये छोटा ट्राइंगल है, राइट? व्हाट इज tan phi इज इक्वल टू y by d, y by d, हाँ, y इज इक्वल टू d tan y. आई एम डिफरेंशिएटिंग dy. टेल में dy किया तो d तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. हाँ, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan? secant square, right? Secant square phi d phi, because we are differentiating with respect dy by d phi, right? So differentiate किया तो d phi उधर ले जाएगा, so ये वाला phi. So we got in terms of phi, right? So k बाहर आ जाएगा, लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल dy की जगह में d secant square d phi cos phi by r square. ओके, नाउ r को भी लेके आएंगे इन टर्म्स ऑफ फाइव में, r को भी लेके आएंगे इन टर्म्स ऑफ फाइव, राइट? सो कैसे लेके आएंगे इन टर्म्स ऑफ फाइव में? टेल में r, बिकॉज r वी जनरली वी टुक, राइट? r मुझे फाइव टर्म्स में चाहिए. सो व्हाट इज cos phi इज इक्वल टू फ्रॉम दिस? व्हाट इज cos phi? Y by R. Adjacent by hypotenuse, right? d by r, right? Only. d by r. r is equal to d by cos phi. सब करो, r स्क्वायर की जगह में नो सॉल्व करो, आ जाएगा बाहर k लैम्डा d secant स्क्वायर phi, राइट? हाँ, सो इंटीग्रल secant स्क्वायर phi cos phi d phi by r square. r square means d square by cos square phi. So ऊपर गए तो cos square phi secant square phi कैंसिल, एंड एक d कैंसिल, एक d बाहर जाएगा, k lambda by d integration of cos is minus sin, right? Integration of cos is sin phi, and from where to integrate? From minus theta 1 to plus theta 1. So minus theta 1 to plus theta 1. Sorry, plus theta 2, right? नो सब करो, कितना आएगा? ex का फॉर्मूला कैसे कितना है? k lambda by d इंटू साइन, दोनों ऐड करने के, राइट? सो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. दिस इज ex. k lambda by d इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. सेम ई करो. ई किधर से स्टार्ट करेगा? यू स्टार्ट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम हियर, राइट? k lambda by d इंटू, नो इधर से कर सकते हैं ना, k lambda by d इंटू cos phi की जगह में sin phi आएगा उसमें. सेम इधर, राइट? सेम इधर करके इधर तक आएगा. सो आपको किधर से स्टार्ट करेंगे? इधर स्टार्ट करेंगे. ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल k lambda by d
sin phi d phi from minus theta 1 to plus theta 2. Now integrate and tell. कितना है? minus k lambda by d cos theta 2 plus cos theta 1. माइनस आएगा, मतलब माइनस अंदर भेजो, सो फाइनली you'll get ey is equal to k lambda by d into cos theta 2 minus cos theta 1 minus cos theta 2. Cos theta 1 minus cos theta 2. Yeah, yeah. Because one, cos of minus theta 1 will be cos theta 1, right? Okay, that's why you will get minus आएगा k lambda by. So ये दोनों फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा. I wrote in formula sheet also. I'll give. तो टाइम लगेगा. K lambda by d sin theta 1 plus sin theta 2 and ey is k lambda by d into cos theta 1 minus cos theta 2. This is a formula. This is a finite वायर के वजह से. Now आपको फिर से डिराइव करने की जरूरत नहीं है. आपको इधर से ओनली विल गेट इनफाइनाइट वायर का एंड सेमी इनफाइनाइट वायर का. ओके, 2 मिनट्स लेंगे. हो गया. Now tell me, for infinite linear charge, ये infinite वायर है, बिफोर वाला finite वायर है. Now infinite वायर है. Now tell me, theta 1 theta 2 कितना होगा? इधर से d डिस्टेंस दूर में I want to find electric field. theta 1 theta 2 is how much? theta 1 हम लोग क्या था finite वायर में, इधर तक हो गया. But suppose wire is here, the theta is increasing or decreasing? Theta 1 is increasing or decreasing? Increasing. So that means theta कितना होगा infinite में? देखो इससे समझो. Suppose मान लो this is we wrote this is theta 2 and theta 1, right? This is theta 1, right? अगर rod इधर इधर होगा तो rod suppose extend हुआ तो the theta 1 is increasing, right? और भी extend हुआ increasing. ऐसे infinite में जाने समय theta 1 कितना होगा? 90 and ऊपर भी 90 जाएगा, right? So theta 1 is equal to theta 2 is equal to 90 degrees. Now tell me ex and ey का substitute करो फॉर्मूला में and tell me the answer. Ex and ey like k lambda by d into sin theta 1 plus sin theta 2. Ey is 0. Ey is 0. Ex is 2k lambda by d. 2k lambda by d. Ex is 2k lambda by d and ey is 0. Understanding? Yes. Now same way, tell me for semi-infinite wire. Semi-infinite wire means एक तरफ तो infinity, इधर I want d distance दूर में I want to find electric field at this point P. Infinite wire है. So theta 1 is 0. Theta 2 is 90. Now tell me ex ey. Why is theta 1 0? Oh, from there it's not. It's starting here, right? Okay. Theta 1 is 0 degrees. Theta 2 is 90 degrees. No, sir, go. K lambda by d for both. How much? K lambda by d for ex and minus k lambda. Ex is k lambda by d and here also ey is k lambda by d, right? Now इसका resultant will be दोनों सेम है ना, e and e माने तो e root 2, right? So semi infinite wire का कितना होगा? Net electric field is k lambda by d into root 2.
एक रिंग का भी खत्म कर देंगे, हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई जाने का, बाहर जाने का, कुछ टेम्पल वगैरह जा रहा है अभी? एक ही एक बाकी है रिंग का। रिंग का दो हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा, होने के बाद विल गो। ओके, चलो नेक्स्ट वन। Electric field on the axis of a uniformly charged ring. ये होने के बाद if you see, then all questions you can answer. आपको तोड़ सकते हैं, कनेक्शन लगा के कुछ कर सकते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एक्सिस में चाहिए, on the axis. So this is a uniformly charged ring. इसका रेडियस है r एंड टोटल चार्ज इज q एंड रेडियस इज r. मुझे सेंटर से x डिस्टेंस दूर में I want to find electric field at this point P. इसका रेडियस इज r. एक्सिस में समझ में, ये वाला रिंग है, एक्सिस में चाहिए। ओके, सो मैं क्या करूंगा, सेम थिंग, उसके स्मॉल डी क्यू एलिमेंट मैं तोड़ने वाला हूँ। डी क्यू एलिमेंट तोड़ूंगा, उसको इधर मान लो डिस्टेंस r. ओके, नाउ टेल मी डी क्यू एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज, एंड दिस इज थीटा मान लो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, राइट, डी। अगेन सेम थिंग, इधर कंपोनेंट क्या होगा, थीटा, डी कॉस थीटा एंड डी sin theta. Now which component is getting cancelled if I take the symmetrical element? Exactly symmetrical element लिया था, dq, उधर वजह से element is de theta. Which element is cancelled? de cos theta and ये वाला d sin theta. So sin theta is getting cancelled, right? मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बोले तो आपको क्या करने का, सिंपली इंटीग्रेट डी कॉस थीटा को, एंड डी फॉर्मूला इज व्हाट, डी इज के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा. ओके, नाउ इधर आपको समझ में आने का, आर इज व्हाट इन द राइट एंगल ट्राइंगल में, दिस 90 डिग्रीज, व्हाट इज आर? मतलब रिलेशन बिटवीन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर की जगह में कैन सब्स्टिट्यूट दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड व्हाट इज cos थीटा फ्रॉम द ट्रायंगल में? X by smaller. So k dq by x by smaller into r square is r cube, and what is I can write like this, r is equal to x square plus r square whole power 1 by 2, and r cube will be cubing on both sides, x square plus r square whole power 3 by 2, right? Now substitute here, k dq x by r cube की जगह में x square plus r square whole power 3 by 2. ओके, इसमें आपको फिर से कन्वर्शन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज k कांस्टेंट, x इज आल्सो कांस्टेंट, x इज ऑलवेज कांस्टेंट एक्सिस में, एंड ये पूरा रिमेनिंग दोनों को आंसर आएगा, एंड व्हाट इज dq 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 मिल गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dq इज टोटल चार्ज q. सो फाइनली क्या आएगा, e along axis is equal to k q x by r square plus x square whole power 3 by 2. We will write r square plus x square whole power 3 by 2. This is the formula for axis. Because सब कुछ बाहर आ जाएगा, only dq integration of dq रहेगा, integration of dq is capital Q. And as we go electric field away from the wire में क्या होगा, electric field decreasing या increasing?
as we go away from the uniformly charged wire, electric field is Decreasing. इसमें क्या होगा मालूम है? स्मॉल थिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर ई इज मैक्सिमम. ओके, ई का फॉर्मूला क्या है? के क्यू एक्स बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2. राइट, दिस इज द फॉर्मूला. आपको व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स में द ई इज मैक्सिमम बोल के बोल रहा है. दैट मीन्स मैक्सिमम मीन्स व्हाट इज द थिंग? डी ई बाई डी एक्स, because it depends on x, right? It counts the positions में the electric field is maximum, that depends on x, right? So d by dx is equal to 0 करने का. Like after differentiating and solve करने के बाद आपको आंसर डायरेक्ट लिखने का, that x value will be implies x value will be plus r minus plus r by root 2 and minus r by root 2 में. इस वैल्यू में you will get the electric field is maximum, r by root 2 minus r by root 2. मतलब if I draw the graph, कैसे रहेगा मन में? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x डिस्टेंस. if I draw, this is a uniformly charged ring, okay. इधर से as we, this is r by root 2 value and this is minus r by root 2 value. So दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम. जब तक मैक्सिमम होगा उसके बाद डिक्रीज होगा. सो मतलब क्या हो रहा है? ये एज वी गो अवे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज इधर तक रीच होने के बाद में इट विल डिक्रीज नॉर्मली. सिमिलरली ये नेगेटिव वाइज में, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे, राइट, वी ड्रू द ग्राफ, राइट, डाउनवर्ड ड्रॉ करने का, राइट. सो इधर नीचे ऐसे नेगेटिव में इंक्रीज मैक्सिमम तक रीचने के बाद में हो जाएगा. इस पॉइंट में मैक्सिमम, इस पॉइंट में मैक्सिमम होगा. इज अ ग्राफ. ये वाला हम लोग सोचेगा नहीं इंपॉर्ट ज्यादा नहीं है, वैसे नहीं है. 3-4 क्वेश्चंस के जेईई मेंस में. सो आपको प्रॉपर वे में करना पड़ेगा.